agriculture, in information technology, so that Pakistan, through Chinese cooperation and support, is able to export its items according to the requirement and standards of Chinese government. I am extremely grateful to my dear President, President Xi, for sending you as a special envoy to Pakistan and show great solidarity of people-to-people friendship between the two countries, showing to the world that both the countries are wedded into a relationship which is unique in this world. We are friends, all-weather friends, iron brothers, and this friendship will continue and will not tolerate any kind of obstacle in its way. 尊敬的何立峰副总理阁下，各位中方和巴方的代表团成员，非常荣幸能够见证一系列重要文件的签署。何副总理阁下，我感谢您抽出时间访问巴基斯坦，并庆祝中巴经济走廊10周年。10年前，谢里夫总理和习近平主席共同签署了中巴经济走廊的协议。当时协议上的签字的墨水还没有干，就已经开始落实了这一个倡议。中巴经济走廊为巴基斯坦带来了超过250亿美元的投资，而且也促进了电力、交通、基础设施、工业园区等方面的合作和项目。现在我们正在进入中巴经济走廊的第2阶段。今天我们所签署的重要的合作文件，将会推动两国之间的经济合作，也将会推动我们在新模式下进行的第2阶段的中巴经济走廊，更加关注农业投资、信息技术等领域。巴方非常感谢中方与巴方的合作和给予的支持，我们也将努力去将符合中国政府标准和要求的产品更多的出口向中国。我非常的感谢习近平主席派遣您何副总理来作为他的特别代表来到伊斯兰堡，并展现两国人民之间的友好和团结，也向世界展示我们两国之间的关系是世界上独一无二的，我们是全天候的朋友和铁杆兄弟，我们的友谊是会为两国做出贡献，而且我们不会允许任何方面进行阻挠。Your Excellency, we are absolutely ready to contribute towards President Xi Jinping's vision of shared destiny of progress and prosperity. ML1 is a very important project. Karachi circular railway system is a very important project, and I have no doubts that together in time to come we will successfully achieve these projects and many other, and make Pakistan stand on its own feet through sacrifice, hard work, and untiring efforts. It is Chinese model, it is President Xi's model, and we will emulate it under the vision of our late Quaid-e-Azam, founder of Pakistan, and promote prosperity and peace in this country. Thank you very much once again for your visit, and I hope you will have a very enjoyable stay. Thank you. 我们已经准备好，我相信我们已经准备好，将积极为习近平主席所提出的人类命运共同体的愿景和一系列的倡议做出更大的贡献。1号铁路干线项目和卡拉奇环城铁路项目都是非常重要的项目，我们相信与中方的合作能够帮助我们就这2个项目取得更大的成功。也希望通过模仿中国的模式，通过更多的艰苦努力，
不懈奋斗和更多的牺牲，巴基斯坦能够自立自强，也能够将我们国父的愿景转化为现实。再次感谢您访问巴基斯坦，非常感谢您，也希望您此访愉快。May I now request you all to proceed for the lunch hosted by the Prime Minister of Pakistan in the honor of His Excellency Khalifang. 有请各位贵宾接下来出席夏巴兹总理为何立峰副总理举行的午宴。इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत करने की तकरीब, जिसमें वज़ीर आज़म और चीन के नायब वज़ीर आज़म भी तकरीब में मौजूद थे और इसके अलावा चीनी वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद थे। 6 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए हैं और चीन के नायब वज़ीर आज़म का ये 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान है और इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि यह हमारे लिए एक एजाज़ की बात है और उन्होंने ये भी कहा कि चीन के वज़ीर आज़म और उनके वफ़द का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की 10वीं सालगिरह पर पाकिस्तान आए और 10 साल कबल सीपैक मंसूबों पर काम का आगाज हुआ था। और ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन। May I now invite Mr. Zafar Hassan, Secretary, Ministry of National Food Security and Research of In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Allah, there is no deity except Him, the ever-living, the sustainer of all existence. Neither drowsiness overtakes Him, nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is it that can intercede with Him, except by His permission? He knows what is presently before them and what will be after them, and they encompass not a thing of His knowledge, except for what He wills. His throne extends over the heavens and on the earth, and He is never weary of preserving them. He is the sublime, the tremendous. Sadaqallahu al-Azim.